Good afternoon, everyone. Welcome to my YouTube channel MFT Web Success. Let's start Indian Geography Part 1. A good sessions for the important of competitive examinations, particularly SSC, banking, railway, and state PCS, as well as teaching line examinations such as BEAT and City. Indian Geography Part 1 to cover Indian location or location of India, size of India, and longitude and latitudinal extent value. आमे आज भारतर भूगोल क्षेत्र में प्रथम भाग को कभर करवा से आमे कभर करवा भारतर लोकेशन अर्थात से केउटी अच्छी केउ स्थान अच्छी इंडिया साइज कौन लंगिट्यूड एंड लाटिट्यूडल एक्सटेंड वैल्यू केते अछि हम जानिबा। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद, जय भारत। सो बेसिक नॉलेज टू अंडरस्टूड Earth. Earth is a not completely a circle. It is a slightly slanted and geoid shape. सामान्य चेप्टा। Earth is two part by equator. Equator is a 0 degree latitude to divide Earth two part, North Hemisphere and South Hemisphere. In similarity, prime meridian is divide Earth two part, Eastern Hemisphere and Western Hemisphere. So this is equator line, this is prime meridian line. This portion is called East North Hemisphere. This portion is called West or Eastern West Hemisphere. West East Hemisphere. This portion called South East Hemisphere. And this portion is called South West Hemisphere, South East Hemisphere. Eastern part, Western part. So clearly understood Earth. Prime meridian, equator line. This is called North position and East Northeast Hemisphere. This portion West and East Hemisphere. West East or East West Hemisphere जहाँ कहले मध्य चलिबो. This portion is South West Hemisphere. This portion is South East Hemisphere completely. So basic knowledge of longitude and latitude is longitude and latitude. Longitude is a semicircle to cover Earth 360 degree as a semicircle line, but latitude is a parallel to equator 90 degree north to 90 degree south point.
middle line is called equator line. The value of equator is 0 degree, and similarly the prime meridian value is 0 degree. So let's start the basic concept of India location. India, neighboring country Bangladesh, Myanmar, Bhutan, Nepal, China, Pakistan. In north portion is Afghanistan, and two main ocean body to cover Bay of Bengal and Arabian Sea. And Bangladesh in this portion is share highest boundary to India and lowest boundary Afghanistan. Lowest boundary Afghanistan. Location. India is located entirely in the northern and eastern hemisphere, specifically in the south central part of continent of Asia. So आमे आगु मध्य जानी जितेबाला आम बुझाऊे हेमिस्फीयर विषय प्रथम करी पर जान इंडिया क्यों हेमिस्फीयर नॉर्थ एवं ईस्ट हेमिस्फीयर एवं मानकर सपोज एटा हूँ एशिया कॉन्टिनेंट ठीक अच्छे एशिया कॉन्टिनेंट यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट यह हूँ इंडिया ताहने यह क्यों अंचल अच्छी बेसिकली देखिले कॉन्टिनेंट हिसाब से एटा सेंटर कि टच कर जम्मू काश्मीर एवं साउथ को टच कर स्टेट तेबे साउथ सेंटर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया क्लियर दिस पर्सन टू क्लियर डाउट India is located, this is called prime meridian. Suppose is this Nile prime meridian. India is east and this called equator. Northeast hemisphere. Clear? The mainland of India extends between latitudes 80 degree 4 second north and 37 degree 6 second north, which means in this line called latitudinal extent, not longitude. Longitude is in this line. Latitudinal extent is 84 in Kanyakumari, 80 degree 4 second, and Jammu Kashmir 37 degree 6 second, and longitudes 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. This called Gujarat. This portion is cover Arunachal Pradesh. So the exact point of India is Indira Koal, Gair Mati or Run of Kutch, Kibutu, and called Indira Point in Andaman Nicobar Dipapunj and mainland Kanyakumari to cover exact point of India to latitude and longitudinal extent. So India size with an area of 3.28 million square kilometer, India is 7th largest country of world. 6 की अच्छन देखिबा the 6th largest country of India, the world in decreases order are Russia is largest country, then Canada, then USA, then China, then Brazil, then Australia. Trick to apply
To orderly remembering in this mind, R C U C B A, Russia, Canada. Then confusion in many websites to show Russia, Canada, China, but the World Wide Web of a mapping website to show Russia, Canada, USA, and China, Brazil, Australia, then India. India is a seventh largest country of world and second most populated country of world and seventh largest country in area wise. The size, the sixth largest country देखने India counts for about 2.4, only 2.4 most important percent of the total geographical area of the world. India 9 states cover the coastal line of India, such as Gujarat is highest coastal line, Maharashtra, Goa, then capital Panaji, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal. West Bengal is a lowest coastal line. Then Goa. Seven state to cover coastal line, and India is the seventh largest. 7टा कोस्टल लाइन आमर अच्छी ना 9टी कोस्टल लाइन, सॉरी 9टी कोस्टल लाइन, 1 2 गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8, वेस्ट बंगाल 9। India has a total land boundary of about 15,200 km, and the coastal line of India stretches along with Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west. From Gujarat westernmost to Arunachal Pradesh easternmost, there are about 13 degree different. Hence, because of this difference, there is a time difference of 2 hours between Gujarat to Arunachal Pradesh. So in this part is very important to clearly understand. India has a total land boundary. India total land boundary केते संपूर्ण भाव में जम्मू काश्मीर ठारू आरंभ करी कि अरुणाचल प्रदेश पर्यंत आमर टोटाल लैंड बाउंड्री केते अछि संपूर्ण भाव लैंड बाउंड्री हम देखि गले हम टोटाल लैंड बाउंड्री हम देखि गले संपूर्ण केते 15,200 किलोमीटर, किंतु कोस्टल लाइन स्ट्रेच कर काहाकू बे ऑफ बेंगल एवं अरेबियन सी जहाँकि पाखापाखि 7,000 पाखापाखि टच करुचे ऊपर तले 7 ऊपर 7 मिसिकी 14 एपट सब टिके अप्रोक्सीमेटली एक्जाक्ट डाटा को एठी पुट कर जाई नहीं, तो यह हूँ 15,200 किलोमीटर। एवं जो देखा लंगिट्यूडनल एक्सटेंड भितर यह 30 डिग्री को डिफर करुचे, जहाँफल 2 आवर डिफर करुचे गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, 2 आवर डिफर करुचे। क्लियर? इंडिया इज लोकेटेड व्हिच हेमिस्फीयर? एबे क्वेश्चन आसीगला हमर अंडरस्टैंडिंग रे केते पावर केते कोन बुझले। इंडिया इज लोकेटेड व्हिच हेमिस्फीयर? जानचंती नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। इंडिया इज व्हिच कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट। एटा सब एग्जाम पढ़िथिला, एटा प्रीवियस एग्जाम रो क्वेश्चन मध्ये किछ मात्रा एटा अछि, 2-3टा क्वेश्चन मध्ये पुट करथिल देखिथिल कोडी को वेबसाइट रे देइथिला इंडिया इज लोकेटेड व्हिच हेमिस्फीयर एंड इंडिया इज व्हिच कॉन्टिनेंट एशिया, ए दिरा पाखा भी थिला बोधे। द मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। देखो नॉर्थ रे केते हम देखिले 37 डिग्री 0.6 सेकंड एवं तळे थिला हमर जोटा हम कन्याकुमारी कहउथिले 8.4 थिला, 80 डिग्री 0.4 सेकंड थिला। नॉर्थ साउथ हे गला।
97°25" इज लंगिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? यह हूँ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ किबुतरी अच्छी एक्जाक्ट पॉइंट रे 97°25" इज लंगिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया इज ए डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड जहाँ आम रिसेंटली सारी आसले ये बस दिंतु सारे 7th लार्जेस्ट कंट्री आम जानते बढ़िया। तापर देखा इंडिया कवर्स हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर? ये आसला पॉइंट केते? ये आसला पॉइंट इंडिया कवर्स हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर? यह थिला केते? 32.28 थिला जो। हाउ मेनी परसेंट इंडिया कवर्स अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड? यह थिला केबे केते? 2.4% जो कवर करुची। बे ऑफ बंगाल लोकेटेड इन वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट ना ईस्ट? ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। गुड, ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। एंड अरेबियन सी वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओशन साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। हाउ मेनी डिग्री डिफरेंट बिटवीन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश? ताकि 30 डिग्री को डिफर करुच्छे। आम कवर कले देखि नियंतु आम जहाँ जहाँ क्वेश्चन पकड़े पढ़ले ये अच्छे मेनसन है ये सबू अच्छी जे अटेंडिवली शुणी 3.28 मिलियन कवर करचंती। देन तापर हम देखिले 2.4% कवर करुच्ची। अरेबियन सी वेस्ट रे, बे ऑफ बंगाल ईस्ट रे, इंडियन ओशन साउथ रे। क्लियर? Thanks for support me and completely watching in this video. Most important for all examinations, please share with your friends, subscribe and like. Jai Hind, Vande Mataram.